the founder of this brand, and I would request Rekha to please take us through with the brand detail and the business opportunity that we have. Over to you, Rekha ma'am. Yeah, thank you very much. And I think the presentation, welcome everyone. Welcome to the show. Thank you very much, Franchise India, for giving this platform to showcase the brand Meghsvana. Mr. Prashant is here on this. He's going to take us through with the presentation as to what is Meghsvana is all about. And then if you have further questions, you have any doubts, you need some clarity, there is some confusions or anything which you need to be addressed, that would be taken care by me. So over to Prashant. Thank you. Let's join this. Thank you for giving me this opportunity, ma'am. I'm just presenting my screen. Just allow me. Most welcome. And meanwhile, in case if any viewers will have any kind of questions related to the brand or related to the business model, you all are requested to please put your question in the Q&A box, and we will come up with the answers once the presentation is over. Thank you so much. I hope my screen is visible to all. It is. Absolutely. Good to go. Is it visible? Yeah, it is visible. Yeah, yes, of course. Absolutely. So, welcome everyone. So, let's talk about Meghsvana. Let me just give you a brief introduction about what Meghsvana is all about. So, Meghsvana is basically a holistic healing center wherein we do cater the emotional, mental, and spiritual need of a person. So, from past few decades, Rekha ma'am has observed that in the Indian society, people are not aware about the mental and spiritual health. Mental health is still a taboo in Indian society. So, due to which she wanted to introduce this particular brand so that under single roof we can cater the emotional, mental, and spiritual need of a person. What is the vision of Meghsvana? So, Meghsvana's only vision is to spread emotional and mental health awareness in the society so that the people can discuss about their emotional, mental, and spiritual health among themselves and with Meghsvana as well, so that we can promote their holistic well-being, we can uh, innate their potential, we can foster their deep connections. About Dr. Rekha Rathi. So Dr. Rekha Rathi is distinguished as mystic healer specializing in intuitive energy, psychic reading, tarot, past life regression, hypnotherapy, numerology, and Taoism. As a mental health practitioner, uh, Dr. Rekha Rathi has worked with Rajasthan High Court and she is still working. And she is a certified associate power coach from ICF, United States. She has done her PhD in sociology from Rajasthan University, has done her BA from Rajasthan, and um, her post graduation in marketing from Symbiosis. She is a certified past life regression therapist. Since 2001, she has been into media. She was running her show at ETV, which is named as Jan Sandesh. She has helped more than 30,000 clients in 2 decades. What are the key highlights of Meghsvana? So till now we have connected over 1,50,000 people and we have spent 20,000 plus hours with them in order to give them the solution, in order to uh, provide them with the right solution, and in order to guide them with the visionary path. The kind of services that we do offer, as I told you, that we are into three kind of services: emotional, mental, and spiritual. So under emotional and spiritual service, we do offer services which are based on astrology, like tarot card reading, basic and advanced, psychic reading, numerology, basic and advanced, understanding the twin flame journey, spirit guidance, space reading, psychic reading, akashic reading, angel card reading, decoding angel numbers, dream decoding, dice reading, runes reading, and animal card reading. So the kind of remedies that we do suggest
to a user after their astrological services, or once they have taken any sort of service under astrology or emotional domain. That is dowsing, a part of hypnotherapy, Reiki healing from level 1 to grandmaster level, spell casting, name correction, basis on numerology, evil and eye session, chakra healing, and aura cleansing. Then, under the roof of mental health, the services that we do offer, that is counseling, which is related or which is based on relationship, family issues, career, business, sexual wellness, and mental health. We do conduct a counseling test to identify their issues, to identify their personality, and post that we do help them with the suggestion, like what is the best suitable mode of services that they need. We do offer life coaching, we do offer meditation session, we do offer past life regression sessions as well. So as I told you that Meghsvana is divided under three categories. Number one, wherein we are catering emotional need of a person. Number two, wherein we are catering the mental health of a person. Number three, wherein we are catering the spiritual health of a person. The kind of services that we offer, like the mode of services that are call, chat, mystic mall, mystic field. So chat, wherein a customer can connect with Dr. Rekha Rathi through live chat. The same as with call. Video call has been also introduced. Mystic Mall is a place wherein the customer can buy physical products. The customer can buy or can approach us for spell casting or for dowsing, etc. Basically, a mall wherein the remedies and the services are offered. Mystic Feed is basically a place wherein we would be mentioning the suggestions, blogs, etc. We would be entertaining the general Q&A of a person. Report. So report is a kind of services which we are trying to start. There are two form of reports, text and video. So for an example, if there is a person who does not have ample amount of time to connect with Dr. Rekha Rathi on chat or on call, so what the person can do is the person can book the report either in text format or in video format. They can punch in their details, they can make the payment, they can share us their question. Then Dr. Rekha Rathi will help them with the answers in a detailed format, okay, either in the form of text or in a form of video. So, India's spiritual landscape, spiritual tourism, dominance, corporate. So, as you guys are very well aware that since the COVID has hit the Indian market, everyone is there on social media. Everyone has started promoting themselves. Everyone has started taking care of their mental health and spiritual health seriously. So, the market of mental health and spiritual health has started growing, and India has been the biggest market for spiritual and mental health. So, moving further to this, I would say there is the franchisee model which we are approaching. We want people to invest in us so that they can also start their earning model. So the setup will cost you 8.3 lakhs, wherein the model one has is for a person who is already having an existing office setup or who has a home office setup, which will be refurbished based on the brand's theme with brand signboard, etc. Model 2 will be a completely new setup wherein we do require an office with a size of 200 to 300 square feet. Fit out will be based on the brand recommendation. So what we suggest is we suggest you to start your setup in a market or a location which is near residential area with good demographics so that the customer can easily approach you. The kind of revenue models that we have different tests and reports through which the customer can come, the customer can get to know about themselves, the customer can get their solutions through counseling, through healing,
family group sessions, referral on courses and products. We do teach astrology related courses here as well. So that is another mode of earning for us. What will be the role of our partner? The role of the partner would be they are liable to run the day-to-day operations. They are liable to manage the expenses, salary, and the operations cost of the franchisee. The record and billing services will be provided through a centralized software. They will be liable to promote the brand in the local area. The kind of space setup which is required, there should be a waiting area, there should be an entrance with a good vibe. There should be healing bed with healing chairs, soundproof healing cabins. There should be ambience lighting for healing space, proper display unit for spiritual products. Furniture placement will be done as per Vastu. Singing bowls, candles, dowsing, pendulum, tarot cards, angel cards, etc. for healing. Majority of these products will be provided by the brand itself. Purity and cleanliness in the healing space, that is a must thing to do. Daily healing ritual for protection and cleansing to maintain the aura of the space and a decent sound system. Now, what are the reasons to partner us? So, it is a unique and growing market for sure. There are hardly a few who has ever tapped into it. Those who have tapped into it, they have already tapped the astrology market. And if you'll go and explore them, you will see a bunch of astrologers who are acting as a board, who have been only suggested to say what the customer wants to hear. However, on Meghsvana, we do provide 100% transparency. The astrologer or the counselor or the spiritual teacher will only convey what is good for you or what is there in the fate or what is written in the destiny, right? There will be no sugar coating. There won't be like anything which is false. We don't provide any false guidance or anything. Meghsvana and Dr. Rathi, they do have strong brand identity. The business model is proven. We have already capped 1.2 CR last year in the year 2022-2023. We are aiming for 2 CR in this particular year. I hope that we would be achieving it. In the year 2023-2024, we had achieved 1.4 CR. In the year 2024-2025, we are targeting 1.8 CR. Diverse services offering. We do offer services to Indian customers. We do cater international users as well. We do offer them services through call chat, through video call, and through reports so that the customer has the ease to approach us. They can connect us in any form. Like they do have the choice so that they can connect with us at any point of time. As I told you that we do prefer ethical and authentic practices only. We are not into black magic and all those stuff. We do not promote that. Community and network. Meghsvana and Dr. Rekha Rathi has started networking, and gradually we have started and we have created a network of 230 plus astrologers and spiritual leaders, which will help you in every possible way to sail you through in your life. So these are a few client testimonials which we had from Instagram and from AstroTalk, wherein Shivanjali rated us 5 stars. She mentioned that Rekha Rathi is exceptional, kind, humble, an amazing lady. She has given her a very good consultation. She is happy with the services of Dr. Rekha Rathi. Key operational practices. So, as I suggested you earlier, the approach should be client centric, whether it's healing, whether it's products or services. The space should be regularly clean, should be well maintained, approved formats of client data collection and healing procedures. So basically, there would be a centralized software wherein you can like just have the record of your client's data and healing procedures. Communication and coordination between faculty, head office, and clients.
You are responsible to provide the response to every query. So basically, every customer should be attended. You are required to maintain the record of inquiries and services. There should be spiritual music playing in the background. You should not be judging your clients basis on their issues, basis on their race, gender, etc. So there would be a standard format in which we will be doing the data collection, we will be doing the healing procedure. Further addition to this, we will do time to time follow up and check up on clients so that we can get to know whether the client situation is improving or not. We will be doing chakra balancing and aura cleansing for healing. We will, the person who is working with Meghsvana in brand or in head office, they are requested to not engage themselves into eating non-veg, drinking, or using alcohol, drugs, etc. in the franchisee premises. You can do whatever you wish to do outside of the premises, but inside the premises, these things are not. Try to keep diffuser in every room to maintain that aura and hygiene. Sitting and chanting switch words in the meditation room for positivity. So, what is our expansion plan? In the initial phase, we are trying to expand into Jaipur, Rajasthan, and Delhi NCR. In the phase two, we will be expanding into Gujarat, Maharashtra, North India, and West India. In the phase three, we will be expanding into South and East zone as the part of Pan India expansion. So, who is our target audience? So, basically, in this particular domain, a baby who has just taken the birth and the person who is not even existing in this universe anymore, even those people are our client, because as soon as the baby will take a birth, their parents or their guardians will start asking you about the future of that baby. And even if the person has left their soul, their lovers or the family members will come to you, will ask you about their whereabouts, how they are, where they are their blessings with us or not, right? So everyone on this planet who is a human is your client, be it a kid, a woman, a working woman, or a housewife, a working guy, or just a layman person. Everyone is your audience, right? Uh, who do we want to target to give this franchisee offer to? We want someone who has any sort of experience in astrology or tarot card reading, or a housewife or a lady who want to start something of their own, a small businessman, or a young entrepreneur, or a passionate learner who want to invest their time into astrology or spiritual service, and they want to grow their own business. These are our initial uh, target partners. So, our ideal partner profile, as I told you, existing practitioners, those who are into tarot card reading and yoga instructions, etc., from a long time, young entrepreneurs who are passionate about healing and intuitive life, who wants to invest into something. Healers, counselors, and life coaches, those who are into healing, counseling, and life coaching, they can just get associated with us, and they can get the franchisee and they can start their own venture. The kind of brand support that we would be providing: number one, 3 months of training would be provided from Dr. Rekha Rathi itself before starting franchisee operations. End-to-end technology support will be provided by Meghsvana brand itself. We will provide you step-to-step guidance to ensure that everything is Vastu compliance, the aura is cleansing, there is right, the branding is happening in the right format. 3 months of initial hand holding will be provided by brand itself, whether it's service execution, where it's like how to market yourself, how to execute services, or how to earn money, or how to train and solve the problem of your users. There will be periodic feedback and refreshers training to ensure that the center is performing efficiently, and there is
a long-term partner sustainability. Further addition to this, franchisee partner details will be updated on brand website and on the application that we are trying to launch in a few months, so that the moment we will just start bombarding into marketing, you guys will also receive those queries through our website and application. We will provide continuous marketing support either in the central market or in the local market to spread the awareness about the brand so that you can get the right customer base. Certification would be provided by Meghsvana itself to all the franchisee partner so that they can offer services which is valuable and which is valid. Financial snapshot, as I told you, that the total investment would be 8.3 lakhs plus GST. Franchising fee would be 4.8 lakhs. Rest will be the cost of the furniture and setting up the area. You can do this on your own too. You have that leverage and liberty. Partner share. So whatever services that you will be getting either through us or you are generating it on your own, you will be getting up to 80% of the revenue share. Average annual ROI will be more than 100% payback period. So whatever you are investing in Meghsvana, you can expect that you will come on to a point in like a no profit, no loss zone within a span of a year, and post that it will be your profit completely. Contract period would be of 5 years, which can be reviewed and which will be reviewed every year and will be carry forwarded. Financial overview. Talking about the financial overview, in quarter 1 we have achieved 1.3 lakhs. This is a previous data. So yearly EBITDA we do have is nearly 8.4%. Thank you all. Thank you for joining me. If you have any questions, you can raise your hand or you can just let me know. I'll be more than happy to assist you guys. Thank you so much, Prashant, for the detailed presentation, right? Uh, to the viewers, I mean, whenever you buy any such kind of brand, whenever you are looking for any kind of brand, right? It is important to look into the people behind the brand, right? If you talk about this particular brand, I mean, Dr. Rekha Rathi is not only a tarot card reader, but psychic reader, life coach, counselor, and a media personality, right? I mean, she has an excellent experience in this business, right? And I guess when the support system is itself is the best, I guess the brand will definitely be doing, the business will definitely do very well if you buy this, right? I would also like to request Dr. Rathi to take us through your journey, like how you actually started and how you managed to create such a brand for last many years. Okay, thank you very much. Thank you, Prashant, for presenting it. Thank you very much, Franchise India, for giving me this opportunity again. So for me, this journey actually started off a pretty long time, which is when I was 9 years old. These intuitions were popping up in my mind, and I was wondering as to what needs to be done, how thing has to be presented in my life, that I really wanted to do something into healing. But I never realized that healing could be a way of, or it talks about predictions, or it has nothing to do. I was so blank about it. But over the period of time, I realized that, if you are someone who is God gifted, if you are someone who can really help people, if you are someone who is passionate about this work, this is actually your work. These days, I've been seeing that a lot of people have, trying to come into this community where you're trying to become a healer, you're trying to become a tarot card reader, or a numerologist, or a consultant, or you're doing some kind of healing. Okay. So all these people who have shown their interest
and they're doing what they're doing. My work talks about going more deeper, going more touching the core beliefs of people, that why they're doing what they're doing in the certain parameters. Okay, what are those struggle areas where people are really suffering, and why people are really disturbed in their life. Okay, so when you touch the core of an individual or help that person out, that's something which inspires me to be in this work. And I am so much in love and passionate about my work that I feel that this is what something which, you know, can awake me at any point of time. And I am so thrilled and excited that to bring up this kind of work where you don't have to run to different places to do a particular one course at one place, and then after 1 year doing something else at some other place, and then something else at some other place. Meghsvana will give you a platform to do everything at just one, in a one basket. Okay, and you will be doing in a professional way. You will be healing people, understanding people. You will be relating to their pain. You will be more not just sympathetic but empathetic as well. Also the process, so I am very much focused on the process work, where uh, you will be trained as to how people has to be cured, not just by predicting and just one part of it. Okay, so I invite people who are from a community who are passionate about this work. Those are my ideal partners. My ideal partner would be people who feel that they are intuitive, they have this passion into healing. My ideal partners are people who are looking for another source of income. My ideal partners would be people who are very much into astrology, numerology, tarot reading, vastu, or any other consultancy where you are just giving or doing this work. Okay, and you have just touched it, but you never thought that you can actually make this as a more I mean, you can approach people in a more professional way. So those would be my ideal partners, and Meghsvana, we look forward for bringing you with us, and we all together grow. That's where I come from. Thank you very much for really listening me. If you have any questions, I'm here to tell you that. Sure, sure. Oh, okay. So the chat box, I Sure. don't see as such any questions. If There you was a can. question. Manoj Acharya is saying Mhm. that my English is not good, but I'm interested. Please give me contact number. So I'll share the contact number. But is अच्छा. it necessary to have English knowledge or fluent in English, for buying this business? No, so just that कि मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ ऐसा नहीं है, but we have all the work in Hindi, we have all the work in English. आप सारा ही काम हिंदी, इंग्लिश या अपनी कोई लोकल लैंग्वेज, बिकॉज वी आर जस्ट नॉट टारगेटिंग कि हमें कोई काम राजस्थान में ही करना है, कि हमारा मॉडल हमने जो बनाया है वो इस तरीके से है कि फर्स्ट फेज में हम राजस्थान को टच कर रहे हैं, ताकि लोगों को बहुत इजी हो सके मिलना, अप्रोच करना, उनको कोई तकलीफ ना आए. But we have very recently participated in different cities. तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये कोई इसको आप लैंग्वेज बाउंड अगर ना करें तो इजी रहेगा. एंड ऑल माय वर्क इज, इट इज ऑल कन्वर्टेबल. वी कैन हैव व्हाटएवर लैंग्वेज आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं. सो ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश, हिंदी और बंगाली एंड ऐसा कुछ भी नहीं है. सो रेस्ट बी अश्योर्ड दैट ऑल द वर्क इज बीन, it can be transferred into any language. Yes. Correct. I mean, yes, ये बिल्कुल सही बात मैम आपने बताया. इसमें Hindi religion, can also, या obviously. I mean, इसमें religion that, से आप इसको बाउंड नहीं कर सकते, आप इसमें किसी कल्चर से right. इसको बाउंड नहीं कर सकते, आप इसे एज से बाउंड नहीं कर सकते, आप इसे किसी लैंग्वेज से बाउंड नहीं कर सकते, किसी जेंडर से बाउंड नहीं कर सकते. आप ये एक ऐसा वर्क है जिसमें आपके पास कोई 8 साल का बच्चा भी आ सकता है और आपके पास कोई 80 साल का आदमी भी आ सकता है.
So you'll have to be, that's why I always say that आपको बहुत ही पैशनेट होना पड़ेगा. It is something जहां पर आप किसी को जज नहीं कर रहे हो कि वो ना आप सीख, जब आप खुद उस जगह पे खड़े होंगे तो आप किसी को कल्चरली या किसी को उससे नहीं बाउंड कर सकते, क्योंकि मेंटल हेल्थ या स्पिरिचुअल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ कभी भी आपके पास आपका कल्चर या आपका धर्म देख के नहीं आती है कि चलो इसका इस धर्म के हिसाब से मैं इसको ये वाली प्रॉब्लम दे देता हूँ. सो इट कम्स फ्रॉम डिफरेंट, लाइफ इज ऑल अबाउट वेरी अनप्रिडिक्टेबल, राइट? सो इसे आप इसे किसी भी दायरे में ना बांटे मनोज जी. मुझे लगता है कि इसे आप बहुत ओपननेस में देखें, और हमारा पूरा जो पर्सपेक्टिव है उसमें सिर्फ ये है कि लोगों की सही तरीके से प्रोसेस के थ्रू काम कैसे किया जा सकता है, वो इट्स द होल आइडिया टू डू दिस. राइट. और वैसे भी आज के समय में आप अगर अभी के वातावरण को भी आप अगर देखो तो टेंशन या बहुत सारी चीजें सबके पास रहती है, राइट? उसमें मेरे ख्याल से जो आपका जो एक होलिस्टिक हीलिंग सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करती है, मुझे लगता है कि अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, राइट? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद दवाई या मेडिसिन खत्म ना कर सके, जो शायद वो आपके पास है. जी. तो अगर मैं थोड़ा सा और मैं समझने की कोशिश करूं कि ये ऑल्टरनेटिव थेरेपी और लाइफ कोचिंग क्या होता है, लाइफ, और वो किस तरीके से एक सोसाइटी को हेल्प करेगा आपके केस सर्विस के माध्यम से? देखिए, आप ये माने कि जितना कंपटीशन मार्केट में हर चीज को लेकर हो रखा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में स्ट्रेस आना या लोगों में उन चीजों के बारे में चिंतन करना बहुत ही मतलब उन चीजों से वरी कर लेना और बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा में चला जाना, या किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में उसके बहुत सारे पार्ट्स एंड पार्टिकल्स रह जाते हैं, और फिर वो इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी लाइफ में उसके इफेक्ट्स जो हैं वो आप रिलेशनशिप में देख रहे होते हो, आप अपने करियर में देख रहे होते हो, आप अपने ओवरऑल वेलबींग में देख रहे होते हो. अब सवाल ये आता है कि क्या मैं इन स्ट्रेस को, क्या मैं इन चीजों को किसी प्रोसेस से पहले समझूं. तो ऑल्टरनेटिव हीलिंग, देखिए, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने उनको बताया कि मुझे स्ट्रेस है और मुझे ये सारी समस्याएं हैं, तो वो आपको सर्टेन दवाई देते हैं और आप अपने घर आके उन दवाइयों को लेते हैं, यू जस्ट बैक टू योर नॉर्मल वर्क. सो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप किन कारणों की वजह से इस स्ट्रेस में हैं, उन कारणों से आप किस तरीके से बाहर आ सकते हैं. उनके बाहर आने के बाद अगर वो स्ट्रेस फिर अगर आपकी लाइफ में वापस आता है, तब आप क्या करेंगे. तो वो जो ट्रिगर्स हैं आपके, वो जो रीजंस हैं आपके, वो जो आप ट्रॉमा से आपके बार बार जो पैटर्न्स को आप रिपीट कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको सीखने को मेघस्वाना में मिलेगी. दैट इज वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. दूसरी बात है कि क्या सिर्फ मैं एस्ट्रोलॉजी से या टैरो कार्ड रीडिंग से या किसी की फेस देखकर, इसमें बहुत सारी और भी मोडालिटीज हैं जिसके थ्रू आप एक इंडिविजुअल को समझ सकेंगे. अभी क्या होता है, अभी ये होता है कि आपने पूछा बताइए मुझे नौकरी कौन सी करनी चाहिए, तो वो एक अप्रोच जो है वो एक जस्ट उसकी जो लिमिटेशंस है वो बहुत ही छोटी हो जाती है, संकीर्ण हो गई है. बट कंपैरेटिवली अगर आप जब प्रोसेस के थ्रू चलते हैं तो आप एक बंदे के पूरे पैशन को निकाल पाते हैं और ये जान पाते हैं कि इस इंसान के लिए कौन सा काम करना बेहतरीन होगा, ये इंसान कहाँ पर जाकर बहुत अच्छा शो अप कर सकेगा, और इसके अलावा उसको ग्रोथ और उसको जो एक उसकी जो सोल को जो मजा आएगा काम करने में, उसका कोई मतलब आप बेसिकली जिंदगियों को टच कर रहे हैं. आप सिर्फ ये मैं बार बार क्यों ये बात मैं बोलती हूँ, क्योंकि जब भी हम फ्रेंचाइजी मॉडल्स में जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे लिए हम
हमें कोई फूड में है या हम कोई प्रोडक्ट की सेलिंग में है, ये जो ब्रांड है मेघस्वना, इट इज अबाउट सर्विसेज, राइट? और सर्विसेज में अगर आप कहीं पर भी किसी की सोल को टच नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप मतलब बहुत ही मतलब गैप है। तो यहाँ पर आप सिर्फ टच नहीं कर रहे हैं, आप उसको उस ट्रॉमा से बाहर निकाल कर और उसकी लाइफ में एक विजन दे रहे हैं, उसे एक होप दिखा रहे हैं, आप उसके साथ उसकी जिंदगी के लिए एक नया उसको एक व्यू दे रहे हैं, राइट? एंड इट इज लाइक हेल्पिंग पीपल टेकिंग आउट देम फ्रॉम अ बिगर इश्यूज ऑफ लाइफ। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई और, एंड लकीली एक अच्छी बात ये भी है कि होलिस्टिक हीलिंग में फ्रेंचाइजी इंडिया के साथ इट इज बीन वंडरफुल जर्नीज फॉर सो फार। तो एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको लगता है दैट दिस रियली कॉल्स यू, देन दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। यस। इनफैक्ट बिल्कुल सही आप कह रही थी। The kind of service you are offering is altogether, unparalleled, right? इन Yeah. सब चीजों को हम किसी मेडिसिन थेरेपी से हम नहीं जोड़ सकते। ये एक होलिस्टिक अप्रोच एक अलग ही चीज है, जिसके थ्रू एक आम एक इंसान जिसको इसकी जरूरत है, राइट, उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से सर्विस मिल सकती है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इतने कम इन्वेस्टमेंट में, राइट, 8.3 लाख रुपए। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, एंड सबसे अच्छी चीज ये है कि आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा, ये सबसे अच्छी बात है, because you have been the expert and you have been doing this. You also have probably have appeared on many channels also, right? Is it not? Yes. Or Correct. yeah, I was there for ETV, I was there for Jan Sandesh, I was there for News 24. मेरा ये आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है कि जब भी हम इस तरह की हीलिंग सर्विसेज में जाते हैं, तो होता क्या है, एक बहुत ही बड़ा जो प्रॉब्लम है वो आप ये देखिए कि एक चीज लर्न करने के लिए आपको एक के पास जाना पड़ेगा, फिर दूसरी चीज लर्न करने के लिए किसी दूसरे को ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बिल्कुल। बाद ये जो प्रोसेस होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, बाय द टाइम आप अपनी जिंदगी के 10-15 साल लगा चुके होंगे और आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका होगा, आपने आपका समय बहुत ज्यादा जा चुका होगा, और आपको मेघस्वना ये सारी चीजें, आपका समय बचा रहा है, आपका पैसा बचा रहा है, और आपको एक इंटेंस कोर की लर्निंग दे रहा है, जहां आप ह्यूमन बीइंग को बहुत ही और ज्यादा तरीके से ठीक कर पाएंगे और उसको बहुत सारे ऑप्शंस दे पाएंगे, आई वुड रादर से एज। तो ये और बहुत ही शॉर्ट उस मतलब आप जब आपकी लर्निंग होती है, हालांकि लर्निंग्स इज हमेशा चलती रहती है लाइफ में, इट इज नेवर एंडिंग थिंग। मैं आज भी सीख रही हूँ, बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरे को आज भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। बट मेरा खुद का ये पर्सनल रियलाइजेशन हुआ कि जब मैंने इस जर्नी को शुरू किया, तो मतलब कितना पैसा आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हो और आप सीख रहे होते हो व्हाई पीपल बिहेव इन अ सर्टेन वे, बट समय इतना जा चुका होता है कि आपको लगता है कि आप शुरू करें। तो यहाँ पर सबसे अच्छी फायदे की जो चीज है वो है कि समय कम लग रहा है, जो अमाउंट हम चार्ज कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे कि अगर आपने अपने 15-20 साल लगा दिए, तो यू विल लैंड अप इन्वेस्टिंग मोर देन 50-60 लाख रुपीज, आपका समय उसके अलावा जो जा रहा है वो है। तो यहाँ पर आप वो सारी चीजों के बैरियर्स को तोड़ते हुए इन वन शॉट एंड यू सब, और इससे भी ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हीलिंग में वो है हैंड होल्डिंग। कहीं पर भी आपने देखा होगा कि जब आप कोर्स करते हैं तो उसकी एक लिमिटेशंस है, यहाँ पर मेघस्वना में आपको 5 इयर्स तक तो हैंड होल्डिंग मिल रही है। जहां कहीं पर भी आपको पिटफॉल्स आएंगे, जहां कहीं पर भी आप अटक रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहां पर ही आपको संभाल लिया जाएगा, क्योंकि दिस इज द वे यू हैव टू डू इट, दिस इज हाउ यू विल गेट टू सी इट। और आप सिर्फ महज
मैं मैक्सिमम टाइम 6 months कह रही हूँ, बट विद इन सम टाइम यू विल बी एबल टू स्ट्रक्चर दैट पर्सन कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है. सो दिस इज द ब्यूटिफुल एस्पेक्ट ऑफ गेटिंग इनटू द मेघस्वना. एब्सोल्युटली. Yes. अच्छा, मनोज आचार्य जी ने पूछा है, हाउ मेनी कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन यू विल गिव इन कोर्सेज एंड ड्यूरेशन एंड ट्रेनिंग विल ऑनलाइन और ऑफलाइन. So, अगर आप शॉर्ट में इसके हाँ, बारे में मैं कुछ बहुत ही जवाब शॉर्ट देते में बता देती हूँ मनोज जी. इसमें डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज है. आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में आपको ट्रेनिंग मिलेगी. आप जो ऑलरेडी जानते हैं उसे आप, हम कहीं पर भी ये नहीं कह रहे कि आपने जो भी नॉलेज गैदर करी आप उसको हटा दें. यू कीप दैट नॉलेज. ये आपकी नॉलेज के अंदर नहीं करी है तो और भी अच्छा है, बिकॉज मेरे लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा आपको ट्रेन करना, आपको समझाना, चीजों को थोड़ा सा मोल्ड करना वुड बी बेटर हो जाएगा. सो हम इसमें तकरीबन आप देखें 10 से 15 मोडालिटीज इसमें आ रही हैं. दूसरी बात है, इसका जो ट्रेनिंग है वो सारा का सारा हम ऑनलाइन कर रहे हैं. और इसके अंदर एवरी फोर्टनाइट इसके अंदर हमारा जो सेशंस हैं उसमें आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स लिए जाएंगे, जिसमें आप बार बार जितनी बार भी पूछना चाहें अपने सवाल ले सकते हैं. ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें 3 months का हम टाइम बोल रहे हैं, पर टू बी एक्सटेंडेड टिल 6 months मुझे लगता है कि ये खिंच जाता है. और इसके अलावा क्या पूछा है आपने मनोज जी, वो बताइए मुझे. सो ऑनलाइन वाज नंबर ऑफ मोडालिटीज ऑन, इसके सबके रजिस्ट्रेशंस होंगे, आपके सारी चीजों के आपके सर्टिफिकेशंस भी होंगे. आपको बकायदा फ्रेंचाइजी का पूरा एक मतलब जिस तरीके से वो लैमिनेटेड पूरा सेट होता है वो आपको मिला जाएगा कि आपने, और हर साल जब आप फॉलो अप कर रहे हैं तो आप अगर प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो उस प्रोसेस के हिसाब से आपके उसमें वो स्पेस होती है जिसमें हम आपको एवरी ईयर का मतलब रजिस्ट्रेशन भी देते हैं, वेयर इन आपने उस प्रोसेस से फॉलो करके ही लोगों की हीलिंग करी है, ना कि सिर्फ 1 या 2 दिन में कोई चीज सीख ली और आपने लोगों की जिंदगियों के साथ कुछ और गड़बड़ कर दी है. तो ये बहुत ही देख रही हूँ मैं कि 1-2 दिन में लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीख के और लोगों के प्रेडिक्शंस कर रहे हैं. मतलब मैं 20 साल से टैरो रीडिंग कर रही हूँ, पर मुझे आज भी लगता है कि और भी बहुत कुछ इसमें सीखने को है. यस. तो मैम, वैसे would you also be involved in selecting the location और looking into the infrastructure जो भी सेंटर का बनेगा उसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा? हाँ, मेरा हर बारीकी में आपको बकायदा, मैंने आपको बताया कि मैं बहुत प्रोसेस से फॉलो कर रही हूँ. आपके यहाँ पर किस टाइप का म्यूजिक है, वो म्यूजिक हमारी तरफ से प्रोवाइड होगा. बकायदा आपको कौन से जो हमारे स्प्रेज होते हैं हम आपको रिकमेंड करेंगे, तो उन रिकमेंडेशंस में आप चलेंगे. पता पड़े कि हमने आपको कोई एक्स रिकमेंड किया, आप कुछ और यूज कर रहे हैं, सो वाई हम उनको ही सजेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो ट्रायल हैं, टेस्टेड हैं, वो उस पर्टिकुलर हीलिंग पे सूटेबल है. ठीक है. तो मेरा कोई किसी ब्रांड के प्रति वो नहीं है कि क्या वो बाकी खराब हैं या अच्छे हैं, बट हीलिंग के अंदर पर्टिकुलर ही चीजों को यूज करना बहुत ही महत्व देता है. क्योंकि जब भी आप किसी भी इंसान की जिंदगी को देखिए, जब हम ऑपरेशन करता है डॉक्टर तो वो पूरी बॉडी को खोलकर देख सकता है, लेकिन जब हीलर किसी को हील करता है तो खोल तो वो भी पूरी बॉडी को रहा है, बट वो फिजिकल बॉडी में हमें दिखता नहीं है कभी भी. लेकिन जब वो अपनी जिंदगी को आपके सामने रख देता है तो उसको वो स्पेस देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपने वो स्पेस नहीं दी है, अगर आपने उस इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे प्रॉप्स लगा दिए हैं या ऐसी चीजें करी है जिससे कि वो ट्रिगर्ड नहीं है अपनी बात को बताने के लिए, सो विच मीन्स दैट कहीं कुछ गैप आ रहा है. सो बहुत ही माइन्यूट चीजें आपको लगेंगी, बट ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीजें होती है जो ऑफन इग्नोर्ड है. लोग इन सब चीजों को मतलब नहीं देखते हैं. यस. तो बहुत ही Very true. निश वाली चीजें जिसे हम कहेंगे कि छोटी छोटी चीजों से आपका ये छोटा सा एक सेंटर बनता है, और वो इस स्पेस में बनता है कि इंसान वहां बैठते ही अपनी जिंदगी को आपके सामने खोल सके.
So I will बिल्कुल, be ये helpful. बहुत जरूरी है, करेक्ट। यस, अगर वो जगह, absolutely. अगर वो इन्वायरमेंट में, जब हम कह रहे हैं कि आप नॉनवेज ना लें, जब हम कह रहे हैं कि उस जगह पर आप शराब ना परोसें, या जब हम कह रहे हैं कि आप पर्टिकुलर जिस इंसान की हो रही है उसको भी आप मना करें, तो उसके सर्टेन रीजंस हैं। क्योंकि अगर आप किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए जा रहे हैं, हिप्नोथेरेपी का कोई मॉडल यूज कर रहे हैं, और वो इंसान अगर अल्कोहल लेकर आया है, तो मुझे बताइए, विल यू बी एबल टू हील दैट पर्सन? कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। मान लीजिए आपने ले रखी और आप हील करें, तो भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। मान लीजिए कि आपकी इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ है, तो वो सूद नहीं हो सकेगा। सो द एनर्जीज जो हैं वो आप चेक खुद की भी कभी करेंगे तो भी आप रियलाइज कर पाएंगे दैट यहाँ पर आज इस जगह पे मैं नहीं कर पाऊंगी काम। सो ये ट्रेनिंग्स आपको दी जाएगी। और ऐसा भी कई बार सिचुएशन मैंने देखी है कि आपको खुद को ट्रैवल करके भी कभी जब आप हीलिंग दे रहे होते हैं, और उस एनवायरनमेंट को भी आपको चेक करना या उसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ नहीं होगा तब भी आप सब कुछ क्लीन कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाट आई एम गोना ट्रेन यू इन। परफेक्ट। इनफैक्ट मनोज जी मैं मेरे 20 साल को मेरी इस जर्नी को आपके सामने, मतलब जब कोशिश करूंगी देने की, तो आई होप दैट इट क्रिएट सम वैल्यू, नॉट जस्ट फॉर यू, बट वो जो लोग आपके पास आएंगे उनकी जिंदगी में आप कुछ होप दे सके। दैट्स द होल ऑब्जेक्टिव। जी बताइए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ये एस्ट्रोलॉजी कोर्स इज वैदिक और नाडी एंड एडीआई? देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो, अगर आप पर्टिकुलर सिर्फ सब्जेक्ट वाइज बात कर रहे हैं, तो हम वैदिक भी आपको दे रहे हैं। और चूंकि हमारे बहुत सारे जो टीचर्स हैं और जो कोचेस हैं, उनमें वो वाली आपका ये नाड़ी वाला भी आता है। तो इट डिपेंड्स आपका क्या पिकअप का स्टेट है। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी ने एस्ट्रोलॉजी कर ली है, और उसका जो बेसिकली हमने जब उसका टेस्ट किया, जब हमने उनको स्कैन किया, तो उनका जो कोर है वो न्यूमरोलॉजी है, और पता पड़ा वो इतने टाइम से यही काम कर रहे थे। सो ऐसा नहीं है कि ये मतलब आपको सिखाया नहीं जाएगा, सिखाया आपको सारा जाएगा, पर इवेंचुअली आप कोई ऐसी मोडालिटी होगी जिसको आप बहुत ज्यादा मतलब फॉलो करेंगे, या आप मतलब उसी पे ही काम करेंगे। वो आपका कोर बन जाएगा कि इसी से ही मुझे काम करना है। Yes. Is there any further question? I think I've seen No, something. that's it. I Notes. mean, we already have the number, right? And very soon I will maybe शायद Yeah, Gaurav available. can इन्होंने connect with him. मनोज जी ने एक और क्वेश्चन पूछा है, एस्ट्रोलॉजी, ये तो नाड़ी वाला मैंने आपको बता दिया। वीडियो एंड नोट्स अवेलेबल, या ये सब आपके पास सारे वीडियोस एंड आपको नोट्स चाहिए, आपको everything would be available. So that's your baby. You have learned it. Perfect. And तो yeah. सपोर्ट की भी बात करें, मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा बेहतर सपोर्ट और कोई नहीं दे सकता। तो सब जिनके लिए भी, whosoever want to go with this business, I mean, you all are absolutely welcome, and we are always available. In case if you have further question, you can contact us. You can put your number in the chat box, and we will connect with you very soon. So, in case we do not have any further question, Rekha ji, that's it for the day. I really appreciate for taking us through with your presentation. Not only the presentation, the way you talked about your journey, what all things you have been contributing to the society. In fact, it is your contribution. I would say that you are contributing to the society, and you are not only contributing but also giving an opportunity to the investors, to the partners to contribute in the society from their end as well. So Yeah. आज का वेबिनार हम यहीं खत्म करते हैं, and I really appreciate everyone whosoever joined and asked questions about Meghsvana. We will connect with you very soon. बाकी लोगों को, in case if you want to connect with the brand with one-on-one, please contact us. Our hotline number 9717683838, or you can also write to us at feedback@franchisenet.in. We will again come up with a new brand tomorrow, and we will explore another business opportunity.
Till then, take care and have a nice day ahead. Thanks so much, Rekha.